सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेविताम् पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिः युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम्। प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां। वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां सुधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम् अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां कामाक्षी क्रोधसम्भवाम्। अनुग्रहपरां बुद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं
पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरां इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्यां वरां श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धराम् उदाराङ्गां हरीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं त्रय्यसौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुधिक्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। Na
யாரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ அறியேனே யாரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ அறியேனே யாரோ இவர் யாரோ
We are celebrating today the birth centenary of Maharshi Ramana, the outstanding exemplar in the modern age of Jnana Marga, or the path of knowledge. ஞானம் பெறலாம் ஞானம் பெறலாம் நலம் பெறலாம் எந்நாளும் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் மோன நிலை கற்றுள்ளார் தேடும் கதி ரமணர் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப் மோன நிலை கற்றுள்ளோர் தேடும் கதி ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப்பெறின் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப்பெறின். Sri Ramana attained illumination as a lad of 16 in July 1896. This was in Madurai, under the shadow of the great temple of Meenakshi Sundareshwara. A few weeks later, he came to Arunachala or Thiruvannamalai. Here, on and around this hill, he spent 450 years until his Mahanirvana in April 1950. A contemporary of Gandhiji and Sri Aurobindo, Maharishi Ramana belonged to the mainstream of Sanatana Dharma and continued the tradition of Ramakrishna and Vivekananda. If Ramakrishna spoke of Mother, Gandhiji of Rama, and Sri Aurobindo of Krishna, Maharishi Ramana regarded Shiva as his own chosen manifestation of the divine being awareness bliss. The Maharishi therefore represents at its purest the philosophy of Advaita, the negation of duality. He is in fact, as Carl Jung says, a true son of the Indian earth, the whitest spot in the white space of Indian monism. Akshara, the spirit imperishable, has to find its empirical home in Akshara, the letter. So egoless was the Maharishi that he took no pains to establish any dharma or found a new sangha. He was content to lose himself in the vast ocean of our common humanity. As those who have observed him for years have noted, his identification with the poorest of the poor was total and most touching. He sought no fame, and yet mature minds, many of them from foreign lands, were drawn to him. Earnest seekers elicited from him some precious works in prose and verse. Great poets like Kavyakanta, Ganapati Shastri and Muruganar wrote much and well about him, so that we now possess a lovely little library of books by him and on him. एकमक्षरं हृदि निरन्तरं भासते स्वयं लिख्यते कथम् हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रम् ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति
हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता पवनचलनिरोधात् आत्मनिष्ठो भवत्वम् देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तद्ददपेतसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः ओहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्टात्मनिष्ठात्मना स्वहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं स्वहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् अरुणाचल शिवः पूर्णो विभाति स्वयम्. Great things happen when man and mountain meet and the timeless breaks into time. The message of the Maharishi is straight and simple, clear and direct. Turn the mind inward, dive deep into the heart and discover who and what you are. For modern man, whose little warring self is sick and broken and unable to regain its true identity, the Maharishi's message provides the sovereign remedy. The self, supreme as awareness and bliss, is available and open anyone to enjoy here and now. அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரம அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரம அருணாரவிந்த பதமே அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே பொருநாடும் சுற்றமொடு வருணாதி பற்றியுளம் மருளாடலன்று இதமும் பொருநாடும் சுற்றமொடு வருணாதி பற்றியுளம் மருளாடலன்று நிதமும் பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே அருணாளுமுற்று சுக அருணாலயத்தில் எழுவார் தருணாருணக்கதிரின் அருணாளுமுற்று சுக அருணாலயத்தில் எழுவார். Indian tradition has down the ages played with symbols like the sun and moon, rivers and mountains.
Shiva, Rama, and Krishna, the most popular manifestations of Godhead. They too are symbols, symbols that live with a life of their own. The Maharishi makes admirable use of Krishna as the master of Buddha Yoga and of Rama as the model of selfless and heroic action. But the dominant symbol which overpowers him by its mere presence is Arunachala, the holy mountain, with its tangible suggestion of steadfast permanence and central peace subsisting at the heart of endless agitation. In retaining a myth, recognizing it as a myth, and revitalizing it by explaining its meanings, the Maharshi is a typical Indian teacher. To him, as to most unspoilt minds, aesthetic experience and spiritual experience are not only closely related but are at the highest level even interchangeable. This is illustrated in the story of the song that follows Arunachala Pancharatnam. One morning in 1917, Kavyakanta Ganapati Shastri, the eminent Sanskrit poet, implored the sage to try his hand at a Sanskrit poem, and that too in the difficult Arya meter. As the Maharishi pleaded his ignorance of Sanskrit prosody, Kavyakanta explained to him the structure and niceties of this form of verse. A few hours later, the Maharishi presented to the astonished scholar these 5 pregnant stanzas in perfect Sanskrit. This hymn, besides being beautiful, embodies the subtleties of Advaita philosophy. Karunapurna Sudhabde, Karunapurna Sudhabde, Kabalita Ghana Vishwarupa Kiranavalya, Karunapurna Sudhabde, Kabalita Ghana Vishwarupa Kiranavalya, Arunachala Paramatma, Arunachala Paramatma, Arunabhava Chittakanja Suvikasaya, Arunachala Paramatma, Arunabhava Chittakanja Suvikasaya, Tvai Arunachala Sarvam Bhutva Sthitva Pralinam Etat Chitram, Tvai Arunachala Sarvam Bhutva Sthitva Pralinam Etat Chitram, Hridayaghamiti Atmataya, Hridayaghamiti Atmataya, Vidyasi Bhoste Vadanti Hridayam Nama, Hridayaghamiti Atmataya, Vidyasi Bhoste Vadanti Hridayam Nama, Hridayam Nama. Agamiti Kuta Ayati Iti Anvishantaha, Pravishtayatyamaladhiya, Agamiti Kuta Ayati Iti Anvishantaha, Pravishtayatyamaladhiya, Avagamya Swam Rupam Shamyati Arunachala Tvayi Nadivabdho, Avagamya Swam Rupam Shamyati Arunachala
ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिं ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयन्ते अरुणाचलत्वयि महीयन्ते यर्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं त्वय्यर्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः. In the first verse, the unity of awareness as being and its power as inclusive harmony and mutual relationship are symbolized by the ocean of grace, the mountain, the sun, and the heart lotus, which opened once will never shut again. In the second verse, the real self is exteriorized as the mountain on which Maya projects the world picture, and it is again interiorized as the awareness which is bliss. Shiva dances as I in the heart space and soars in stillness as Aruna Hill. The third verse describes the method of inquiry, the sadhana, in which the sadhaka and the siddha disappear and the self alone remains. The last two verses assure victory to the follower of yoga, bhakti and karma, because once the ego is dissolved, one sports in the sea of bliss which is one's true being. In the Maharishi's view, the scientific method of self-inquiry can well go hand in hand with the poetic method of self-surrender. Far from there being any conflict between jnana and bhakti, the two modes of awareness are complementary and reinforce each other. Muruganar, a great Tamil poet in his own right and an ardent lifelong devotee of the Maharishi, declares in ringing Tamil words, "True seer who sees in all the worlds naught but the Spirit Supreme, he overcame the universe with naught but inner strength, a fortress of security to devotees, his feet, naught save their shadow is sanctuary for us." பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான் பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான் உரநல்லது துணையின்றி இவ்வுலகியாவையும் நின்றான் உரநல்லது துணை
சரணில்லை நமக்கே ரமண சரணல்லது மற்றும் சரணில்லை நமக்கே. Ramana's message, with its two ingredients of self-inquiry and self-surrender, provides a hopeful remedy for the many maladies afflicting modern man. Lakshmana Sharma, the renowned naturopath, pays this homage to the Maharishi, the Mahayogi, and the master physician. ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशम् ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तम् ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तम् मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः. भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः. विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ते. तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ते. रमेतरूपे तव को न दिव्ये रमेतरूपे तव को न दिव्ये त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातवाख्या सकलागहन्त्री. मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातवाख्या सकलागहन्त्री. यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाच्यं यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाच्यं. त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि
You have been listening to a special program of music on the occasion of the birth centenary of Shri Ramana Maharshi, the sage of Tiruvannamalai. The songs were rendered by Srimati M.S. Subbulakshmi. Professor K. Swaminathan introduced the program. We are celebrating today the birth centenary of Maharshi Ramana, the outstanding exemplar in the modern age of Jnana Marga, or the path of knowledge. ஞானம் பெறலாம் ஞானம் பெறலாம் நலம் பெறலாம் எந்நாளும் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் மோன நிலை கற்றுள்ளார் தேடும் கதி ரமணர் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப்பெறின் மோன நிலை கற்றுள்ளோர் தேடும் கதி ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப்பெறின் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப்பெறின். Sri Ramana attained illumination as a lad of 16 in July 1896. This was in Madurai, under the shadow of the great temple of Meenakshi Sundareshwara. A few weeks later, he came to Arunachala or Tiruvannamalai. Here, on and around this hill, he spent 450 years until his Mahanirvana in April 1950. A contemporary of Gandhiji and Sri Aurobindo, Maharshi Ramana belonged to the mainstream of Sanatana Dharma and continued the tradition of Ramakrishna and Vivekananda. If Ramakrishna spoke of Mother, Gandhiji of Rama, and Sri Aurobindo of Krishna, Maharshi Ramana regarded Shiva as his own chosen manifestation of the divine being awareness bliss. The Maharishi therefore represents at its purest the philosophy of Advaita, the negation of duality. He is in fact, as Carl Jung says, a true son of the Indian earth, the whitest spot in the white space of Indian monism. Akshara, the spirit imperishable, has to find its empirical home in Akshara, the letter. So egoless was the Maharishi that he took no pains to establish any dharma or found a new sangha. He was content to lose himself in the vast ocean of our common humanity. As those who have observed him for years have noted, his identification with the poorest of the poor was total and most touching. He sought no fame, and yet mature minds, many of them from foreign lands, were drawn to him. Earnest seekers elicited from him some precious works in prose and verse. Great poets like Kavyakanta Ganapati Shastri and Muruganar wrote much and well about him, so that we now possess a lovely little library of books by him and on him. एकमक्षरं हृदि निरन्तरं भासते स्वयं लिख्यते कथम्
हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रम् ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति हृदि विषमनसा स्वं चिन्वतां मज्जता पवनचलनिरोधात् आत्मनिष्ठो भवत्वम् देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तद्ददपेतसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्टात्मनिष्ठात्मना सोऽहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् सोऽहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्. Great things happen when man and mountain meet and the timeless breaks into time. The message of the Maharishi is straight and simple, clear and direct. Turn the mind inward, dive deep into the heart and discover who and what you are. For modern man, whose little warring self is sick and broken and unable to regain its true identity, the Maharishi's message provides the sovereign remedy. The self, supreme as awareness and bliss, is available and open anyone to enjoy here and now. அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரம அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரம அருணாரவிந்த பதமே அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே பொருநாடும் சுற்றமொடு வருணாதி பற்றியுளம் மருநாடலன்று இதமும் பொருநாடும் சுற்றமொடு வருணாதி பற்றியுளம் மருநாடலன்று நிதமும் பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே அருணாலயத்தில் எழுவார் தருணாருணக்கதிரின் அருணாலயத்தில்
அருணாலயத்தில் இழிவார். Indian tradition has down the ages played with symbols like the sun and moon, rivers and mountains. Shiva, Rama and Krishna, the most popular manifestations of Godhead. They too are symbols, symbols that live with a life of their own. The Maharishi makes admirable use of Krishna as the master of Buddha Yoga and of Rama as the model of selfless and heroic action. But the dominant symbol which overpowers him by its mere presence is Arunachala, the holy mountain, with its tangible suggestion of steadfast permanence and central peace subsisting at the heart of endless agitation. In retaining a myth, recognizing it as a myth, and revitalizing it by explaining its meanings, the Maharshi is a typical Indian teacher. To him, as to most unspoilt minds, aesthetic experience and spiritual experience are not only closely related but are at the highest level even interchangeable. This is illustrated in the story of the song that follows Arunachala Pancharatnam. One morning in 1917, Kavyakanta Ganapati Shastri, the eminent Sanskrit poet, implored the sage to try his hand at a Sanskrit poem, and that too in the difficult Arya meter. As the Maharishi pleaded his ignorance of Sanskrit prosody, Kavyakanta explained to him the structure and niceties of this form of verse. A few hours later, the Maharishi presented to the astonished scholar these 5 pregnant stanzas in perfect Sanskrit. This hymn, besides being beautiful, embodies the subtleties of Advaita philosophy. करुणापूर्ण सुधाब्धे करुणापूर्ण सुधाब्धे कबलित घन विश्वरूप किरणावल्य करुणापूर्ण सुधाब्धे कबलित घन विश्वरूप किरणावल्य अरुणाचल परमात्मा अरुणाचल परमात्मा अरुणाभव चित्तकंज सुविकासाय अरुणाचल परमात्मा अरुणाभव चित्तकंज सुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनम् एतत् चित्रं त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनम् एतत् चित्रं हृदि अहमिति आत्मतया हृदि अहमिति आत्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयो नाम हृदि अहमिति आत्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयो नाम हृदयो नाम अहमिति कुत आयाति इति अन्वेष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अहमिति कुत आयाति इति अन्वेष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य
स्वं रूपं शाम्यति अरुणाचल त्वयि नदीवब्धो अवगम्य स्वं रूपं शाम्यति अरुणाचल त्वयि नदीवब्धो त्यक्त्वा विषयं पाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसा तस्त्वां त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसा तस्त्वां ध्यायं पश्यति योगी दिधितिं ध्यायं पश्यति योगी दिधितिं अरुणाचल त्वयि महीयन्ते अरुणाचल त्वयि महीयन्ते यर्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं वैयर्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः. In the first verse, the unity of awareness as being and its power as inclusive harmony and mutual relationship are symbolized by the ocean of grace, the mountain, the sun, and the heart lotus, which opened once will never shut again. In the second verse, the real self is exteriorized as the mountain on which Maya projects the world picture, and it is again interiorized as the awareness which is bliss. Shiva dances as I in the heart space and soars in stillness as Aruna Hill. The third verse describes the method of inquiry, the sadhana, in which the sadhaka and the siddha disappear and the self alone remains. The last two verses assure victory to the follower of yoga, bhakti and karma, because once the ego is dissolved, one sports in the sea of bliss, which is one's true being. In the Maharishi's view, the scientific method of self-inquiry can well go hand in hand with the poetic method of self-surrender. Far from there being any conflict between jnana and bhakti, the two modes of awareness are complementary and reinforce each other. Muruganar, a great Tamil poet in his own right and an ardent lifelong devotee of the Maharishi, declares in ringing Tamil words, "True seer who sees in all the worlds naught but the Spirit Supreme, he overcame the universe with naught but inner strength, a fortress of security to devotees, his feet, naught save their shadow is sanctuary for us." பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான் பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான் முரண்
சரணில்லை நமக்கே ரமண சரணல்லது மற்றும் சரணில்லை நமக்கே. Ramana's message, with its two ingredients of self-inquiry and self-surrender, provides a hopeful remedy for the many maladies afflicting modern man. Lakshmana Sharma, the renowned naturopath, pays this homage to the Maharishi, the Mahayogi, and the master physician. ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तं ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तं मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ते तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ते. रमेतरूपे तव को न दिव्ये रमेतरूपे तव को न दिव्ये त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातवाख्या सकलागहन्त्री मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातवाख्या सकलागहन्त्री यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाचं यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाचं त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि
You have been listening to a special program of music on the occasion of the birth centenary of Shri Ramana Maharshi, the sage of Tiruvannamalai. The songs were rendered by Srimati M.S. Subbulakshmi. Professor K. Swaminathan introduced the program.
மறவேனே என்னாலிலுமே மறவேனே என்னாலிலுமே இரிதாரி உனதருளே இரிதாரி உனதருளே மறவேனே என்னாலிலுமே நஞ்சை நீ உண்டானையோ இந்த பஞ்சையை காதனையோ நஞ்சை நீ உண்டானையோ இந்த பஞ்சையை காதனையோ ஒரு விஞ்சை புரிந்தனையோ ஒரு விஞ்சை புரிந்தனையோ மறவேனே என்னாலிலுமே ஆரங்க சூடிடுவேன் அலங்காரங்க செய்திடுவேன் ஆரங்க சூடிடுவேன் அலங்காரங்க செய்திடுவேன் பல கீதங்கள் பாடிடுவேன் பல கீதங்கள் பாடிடுவேன் மறவேனே என்னாலிலுமே கண்ணாயன் கண்மணியே முகில் வண்ணாயன் தந்தூரையே கண்ணாயன் கண்மணியே முகில் வண்ணாயன் தந்தூரையே உன்னை பண்ணால் துதித்திடுவேன் உன்னை பண்ணால் துதித்திடுவேன் மறவேனே என்னாலிலுமே जय मीरा प्रभु गिरिधारी 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 मीरा प्रभु गिरिधारी நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாழும் நிறைந்த சுடர் மணிப்பூம் நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாழும் நிறைந்த சுடர் மணிப்பூம் பஞ்சுக்கு நேர் பல துன்பங்களாம் இவள்
அவள் பார்வைக்கு நேர் பெருந்தீ வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையக மாந்தரெல்லாம் வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையக மாந்தரெல்லாம் தஞ்சம் என்றே உரைப்பீர் அவள் பேர் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் தஞ்சம் என்றே உரைப்பீர் அவள் பேர் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் நம்புவதே வழி என்ற மறை தன்னை நாம் இன்று நம்பிவிட்டோம் கும்பிட்ட நேரமும் சக்தி என்றால் உன்னை கும்பிடுவேன் மனமே அம்புக்கும் தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும் அச்சமில்லாதபடி அம்புக்கும் தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும் அச்சமில்லாதபடி உம்பக்கும் இம்பக்கும் வாழ்வு தரும் பதவோ சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் வெள்ளை மலர் மிசை வேத கரு பொருளாக விளங்கிடுவாய் வெள்ளை மலர் மிசை வேத கரு பொருளாக விளங்கிடுவாய் தெள்ளிக்கலை தமிழ் வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன் எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி இராதந்த நாவினிலே எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி இராதந்த நாவினிலே வெள்ளமெனப் பொழிவாய் சக்தி வேர் சக்தி வேர் சக்தி வேர் சக்தி வேர் வெள்ளமெனப் பொழிவாய் சக்தி வேர் சக்தி வேர் சக்தி வேர் சக்தி வேர் அரங்காவும் மகிமை அறிந்தவர் யார் அரங்காவும் மகிமை அறிந்தவர் யார் அறிந்தவர் யார் எங்கும் நிறைந்தவனே அறிந்தவர் யார் எங்கும் நிறைந்தவனே அரங்காவும் மகிமை அறிந்தவர் யார் யானை கன்று ஆதி மூலமே என்று ஓலமிடவும் ஓடி வந்தனையே ஈனர்கள் சபையில் திரௌபதி கதற ஈனர்கள் சபையில் திரௌபதி கதற மானங்காத்தனைய ஆனி அரங்காவும் மகிமை அறிந்தவர் யார் அரங்காவும் மகிமை அறிந்தவர் யார் பிரகலாதனையே பாலனம் செய்ய நரஹரி